हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए गाइस, ये है नकुमट्स फुल रोस्टेड एंड हाफ रोस्टेड। ये भी मेरी एक बहन की रिक्वेस्ट थी, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट को चलिए पूरा करते हैं। उनको ना मेरा एक नकुमट का वीडियो है, वो उनको बहुत पसंद है। हमेशा वो बोलती हैं ये वीडियो डिलीट मत कीजिएगा, ये वीडियो डिलीट मत कीजिएगा। तो बहन, ये चैनल जब डिलीट हो जाएगा तो मैं कैसे जो है उसको बचा पाऊँगी, क्योंकि मुझे वीडियो ना ऐसा सेव करने नहीं आता है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि कुछ एडिटर्स जिन्हें मैंने अलाउ किया करंट वीडियो बनाने के लिए, और या जिन्हें अलाउ नहीं भी किया, आप लोग मेरी वीडियो एडिट कर लो। कम से कम मेरे व्यूवर्स जो हैं इस बहाने ही आप लोग के चैनल के ही थ्रू तो मेरी वीडियो देख लिया करेंगे, पुरानी वीडियो। तो अब कोई भी एडिट करेगा मेरी वीडियो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस यही बोलना था। अब तो 3 महीने के बाद ही पता चलेगा इस चैनल का क्या होगा नहीं होगा। मैं बनाऊंगी न्यू चैनल, फिर बनाऊंगी, बट पुराने चैनल की वीडियो मैं कहाँ से ले कर आऊँगी। ना मेरे पास 2 मोबाइल है, ना कोई और ज़रिया है। तो यही वजह है। और प्लीज़ मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरे न्यू वाले चैनल को जो व्लॉगिंग का है, प्लीज़ आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसके भी वीडियो को देखिए, उसमें भी अपनी राय दीजिए। ठीक है, तो चलिए करंट स्टार्ट करते हैं। हाफ रोस्टेड। बहुत बहुत अर्दी है। दिस इज फुल।
तो डन गाइस, क्रंच बहुत बहुत औसम था। बट ना एक मुझे ग्रीटी आया, तो मुझे लग रहा है कि ये भी ग्रीटी ही होगा शायद। देखिए ना, इसका अजीब सा है, तो इसीलिए मैंने इसे छोड़ दिया। ओवरऑल क्रंच करके बहुत मज़ा आया। बट एक बात है, ये फुल रोस्टेड ना थोड़ा सा ज़्यादा किरकिर किरकिर टाइप का लगता है, ग्रीटी नहीं, मगर क्रंच करने में ना एकदम मतलब अच्छे से घुलता नहीं है वो, तो ये बात है। बाकी क्रंच अच्छा था, बहुत औसम था। हाफ हाफ रोस्टेड ना वो बहुत औसम था। तो क्रंच करके बहुत मज़ा आया। आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।